मास मोमेंट्स एंड सेंटर ऑफ मास। आज इस टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम मैथमेटिकली मास मोमेंट एंड सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं। A thin plate cover the rectangular region bounded by the x-axis and the line x is equal to 1, y is equal to 2x. In the first quadrant, the plate density at a point having coordinate x comma y is 6x plus 6y plus 6. Find the plate's mass, first moments and center of mass about the कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस एग्जांपल में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है एक प्लेट का जो बाउंडेड है एक्स एक्सिस, आवर लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द डेंसिटी ऑफ द प्लेट इज represented by sigma x and y is equal to 6x plus 6y plus 6. So we have to find the plate mass, first moment and center of mass about the coordinate axis. First of all, sketch the plate in a rectangular region. So this rectangular region represents the plate, because if we want to sketch the plate, so we will sketch the plate in the first quadrant. यहाँ पर अगर हम प्लेट को स्केच करना चाहे तो उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्केच करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास कहा गया है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस. So this is represent the x-axis and this represent the y-axis. So the rectangular region bounded by the x-axis. So first boundary for this plate is the x-axis and the line x is equal to 1. और जिसमें हमारे पास x की जो अपर लिमिट है वो हमारे पास क्या है 0 to 1 है, यानी यहाँ जो x-axis पर हमारे पास जो बाउंड्री है वो 0 to 1 है एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x और लाइन y इज इक्वल टू 2x, ये लाइन जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2x है, तो ये इस तरह जा रहा है और ये इस तरह जा रहा है. सो हमारे पास जो बाउंडेड रीजन है वो हमारे पास ये रीजन बन रहा है. तो इसमें अगर देखा जाए तो x की लिमिट हमारे पास 0 to 1 होगी और y की लिमिट हमारे पास क्या होगी 0 to 2x होगी. तो ये हमारे पास 2x रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका लोअर लिमिट जो है 0 है और इसका अपर लिमिट वेरी कर रहा है, तो हमारे पास क्या है 2x है. तो ये हमने स्केच बना लिया है एक प्लेट का. अब हमने इसकी मास, फर्स्ट मोमेंट्स और सेंटर ऑफ मास मालूम करनी है. सो द प्लेट मास, जो फर्स्ट मास के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है m इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगुलर रीजन r ऑफ द डेंसिटी dy dx. So sigma x and y represent the density at the point having coordinate x and y. So we want to integrate this function with respect to y and then with respect to x. So limits for the y is 0 to 2x and limit on the basis of x is 0 to 1, because x represent this line and y represent 0 to 2x. So 6x plus 6y plus 6 represent the plate density dy dx. First of all, we integrate this function with respect to y. So the integration of 6x is equal to 6xy. Integration of 6y is equal to 6y square divided by 2 and integration of 6 is equal to 6y having limits 0 to 2x. Now apply these limit on this function. So formula for the applying these limit on this function is the upper limit minus lower limit. तो यहाँ पर अगर हम upper limit पुट करें तो यहाँ हम y की जगह और y की जगह 2x पुट करेंगे
फिर हम y की जगह 0, y की जगह 0, y की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ -0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 12x square plus 12x square plus 12x. 12x square plus 12x square is equal to 24x square plus 12x dx. Now we want to integrate this function and this function with respect to x. So integration of 24x square is equal to 24x cube divided by 3, and integration of 12x is equal to 12x square divided by 2, having limits 0 to 1. 3 1 is 3, 3 8 are 24, 2 1 is 2, 2 6 are 12. So we will get x at x cube minus 6x square, having limits 0 to 1. Now putting these limits to this function on the way of upper limit minus lower limit. तो यहाँ x की जगह हम upper limit पुट करेंगे, x की जगह lower limit पुट करेंगे और दोनों के दरमियान क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे. After calculation we will get the plate mass is 14. Now we want to find the first moment about x-axis and about y-axis. Moment about x-axis, formula for the moment about x-axis is mx as mx is equal to double integral over r y and to plate density dy dx. This is formula for the first moment about the x-axis. So mx integral over r represent the limits of the integral with respect to y and with respect to x. We already discussed that the limit for the x is 0 to 1 and limits for y 0 to 2x. Y and sigma of x and y represent the plate density y, and the value of the sigma of x and y is 6x plus 6y plus 6. So we will put the value of sigma of x and y. Multiplying y to these three terms, so we will get this answer. After calculation, after integration with respect to y and then with respect to x and putting the limits of y and limit of x, so we will get the first moment mx is equal to 11. On the similar way, we find the first moment about y-axis and is representing by my, and formula for this my is equal to x sigma of x and y dy and dx. So अगर इसी तरह हम फर्स्ट मोमेंट अबाउट y एक्सिस फाइंड करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, my आ रही है. इसके बाद अगर हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाहे तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट होगा और वो पॉइंट हमारे पास है x बार y बार. x बार इज इक्वल टू my डिवाइडेड बाई m and y bar is equal to mx divided by m. So the value of my is equal to 10 and the value of m is 14. Similarly, the value of mx is 11 and the value of m is 14. So this coordinate, this point represent 10 divided by 14 and 11 divided by 14. So this point represent the center of the plate mass.